Hello students, this is the part third of the poem The Cloud written by P.B. Shelley. Let's begin the poem. The cloud says that I bind the sun's throne with the burning zone and the moons with a girdle of pearls. The volcano are dim and the stars reels and swim when the whirlwinds my banner unfurl. From cape to cape with a bridge like shape over a torrent sea. Sunbeam proof I hang like a roof. The mountains its columns be. The triumphal arc through which I march, with hurricane, fire and snow, when the parts of the air are chained to my chair, is the million-colored bow. The sphere fire above its soft-color bow, while the moist earth was laughing below. I bind the sun's throne with a burning zone, and the moon's with a girdle of pearl. The cloud waves a flaming girdle round the sun. Sometimes a circle of light made by cloud is seen round the sun. This is the girdle when the clouds wave round the sun. कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य के चारों ओर एक गिर्डल बन गई हो या गोलाकार जो आकृति होती है बादलों के द्वारा वो बना दी जाती है। तो इसलिए बादल कह रहा है कि आई बाइंड द सन थ्रोन विद ए बर्निंग जोन। मैं जो सूर्य का जो सिंहासन है उसको एक बर्निंग जोन की तरह बांध देता हूँ। इन द मून्स विद द गिर्डल ऑफ पर्ल। और उसी प्रकार जब चंद्रमा रात्रि के समय उदय होता है तब उसके चारों तरफ भी मैं एक गिर्डल मोतियों के आकार की बना देता हूँ, क्योंकि चंद्रमा का कलर सफ़ेद होता है और इस प्रकार बादलों का कलर भी उस समय सफ़ेद दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा के चारों ओर भी जो आकृति बनती है गोल कलर की उसको गिर्डल बोलता है बादल, और मैं मोतियों की जो गिर्डल होती है वो चंद्रमा के चारों ओर बना देता हूँ। द वोल्केनो आर डिम एंड द स्टार्स रील एंड स्विम व्हेन द विंड माई बैनर अनफर्ड। जो वोल्केनोज होती हैं या जो ज्वालामुखी होती हैं वो क्या होती है, आर डिम एंड द स्टार्स रील एंड स्विम। जो वोल्केनोज होती है वो बहुत ही तेज़ गति से या बहुत ही उत्पात मचाते हुए भूमि पे प्रकट होती है पहाड़ी क्षेत्रों पे। लेकिन व्हेन द विंड माई बैनर अनफर्ल, लेकिन जो तेज़ गति की हवाएं होती हैं जब मेरा बैनर अनफर्ल कर देती है या जो मेरी पताका है या जो मेरा झंडा है उसको खोल देती है, अर्थात जब मैं तेज़ गति से चलता हूँ या मेरे बादल है जो बहुत तेज़ गति से चलता है या बरसात करता है, तो क्या होता है उस समय वोल्केनोज बरसात के कारण वो क्या हो जाती है, उनकी जो तूफ़ान होता है या जो उसमें से जो आग निकलती रहती है ज्वाला होती है वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है या कम हो जाती है। एंड स्टार्स रील्स एंड स्विम। चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में स्टार्स रील्स एंड स्विम, जो तारे हैं वो बहुत तेज़ गति से व्रिल कर रहे हों, घूम रहे हों, दौड़ रहे हों। फ्रॉम केप टू केप विद ए ब्रिज लाइक शेप ओवर ए टोरेंट सी। सनबीम प्रूफ आई हैंड लाइक ए रूफ। द माउंटेन्स इट्स कॉलम बी। फ्रॉम केप टू केप यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे, जो महासागर होते हैं उनके ऊपर बादल हैं एक किनारे से दूसरे किनारे के ऊपर ऐसे छा जाते हैं विद ए ब्रिज लाइक शेप, जैसे कि कोई ब्रिज बनाया हुआ हो। ओवर ए टोरेंट सी, एक बहुत ही तूफ़ानी या उत्पात मचाता हुआ जो समुद्र होता है उसके ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ते हुए बादल ऐसी शेप बना लेते हैं जैसे कि कोई ब्रिज बना हुआ हो। सनबीम प्रूफ आई हैंड लाइक ए रूफ। और वो इतना गहरा ब्रिज बनाते हैं कि उनमें से सन की जो बीम्स होती हैं या किरणें होती हैं वो भी पार नहीं हो पाती है। आई हैंड लाइक ए रूफ, और मैं ऐसा दिखाई देता हूँ जैसे कि मैंने उस महासागर के ऊपर या सागर के ऊपर एक छत का काम किया है। द माउंटेन्स इट्स कॉलम बी। और जो माउंटेन्स हैं वो उस ब्रिज के लिए या उस छत के लिए किसका काम करते हैं, कॉलम्स या पिलर्स का काम करते हैं जो उस छत को रोके हुए हैं। यहाँ पे बादल अपनी तुलना एक बार छत से करता है और एक बार ब्रिज से करता है उस समुद्र के ऊपर। द ट्रायम्फल आर्क थ्रू विच आई मार्च विद हरिकेन फायर एंड स्नो व्हेन द पावर्स ऑफ द एयर आर चेन टू माई चेयर द मिलियन कलर्ड बो। द ट्रायम्फल आर्क, आर्क एक प्रकार का गोलाकार दरवाज़ा होता है
लेकिन ये कैसा ट्रायम्फल, यानी कि कोई विजेता जब आ रहा होता है तो उसके स्वागत के लिए जो दरवाज़ा बनाया जाता है, उस प्रकार के ट्रायम्फल आर्क के थ्रू विच आई मार्च, उसमें से होते हुए मैं गुजरता हूँ। किसके साथ? जैसे कोई विजेता राजा या महाराजा अपने द्वार से या ट्रायम्फल आर्क से गुजरता है अपने योद्धाओं के साथ, उसी प्रकार मैं अपने योद्धा, जो कि कौन कौन है? हरिकेन, फायर एंड स्नो। हरिकेन यानी बहुत तेज़ गति का तूफ़ान, एक प्रकार के तूफ़ान का नाम है। फायर एंड स्नो, आग और बारिश। स्नो यानी बर्फ़। इनके साथ होते हुए मैं उस द्वार से गुजरता हूँ। व्हेन द पार्ट्स ऑफ द एयर आर चेन टू माई चेयर, और उसी समय जैसे किसी राजा महाराजा जो कि अपने शत्रुओं को, जो कि हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, उन्हें अपने चेयर या अपने जो उनका रथ होता है उनसे बांध के घसीटते हुए लेके आते हैं, उसी प्रकार जो हवा है वो उसको मैं अपने साथ घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ। व्हेन द पार्ट्स ऑफ द एयर आर चेन टू माई चेयर, यानी कि जो हवा है उसको मैंने अपनी थ्रोन के साथ बांधते हुए लेके जा रहा हूँ। इज़ द मिलियन कलर्ड बो। और जो ट्रायम्फल आर्क है वो कैसा है? मिलियन कलर्ड बो, एक रेनबो की भांति है। यानी मैं रेनबो, जो रेनबो है उसके लिए आर्क या ट्रायम्फल आर्क का काम कर रहा है, जो कि मिलियन कलर्ड बो, एक बहुत ही मिलियन कलर वाला बो या बहुत ही सुंदर जो धनुष होता है उसकी तरह दिखाई देता है। द स्फीयर फायर अबव इट्स सॉफ्ट कलर वो while the moist earth was laughing below, and the delicate color of the rainbow were mixed or prepared or woven by sunlight, while the earth wet with rain seemed to be laughing below। और उसी समय जब मैं चल रहा होता हूँ तो मेरे जो डेलिकेट कलर हैं जो रेनबो के, वो सूर्य की किरणों के साथ मिलते हुए घुलते हुए प्रतीत होते हैं, और मेरे चलने के कारण जो धरती गीली हो जाती है, यानी कि जब बादल ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो बरसात होती है तो धरती भीग जाती है, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मेरे आने के कारण जो धरती है हंसते हुए उसका स्वागत कर रही है। दिस इमेज माइट बी सूटेबल for the imagery of the rainbow through which the cloud is passing with his warriors like storm, hurricane and snow. Now next, this is the last stanza of the poem. The cloud says that I am the daughter of earth and water and the nursling of the sky. The cloud says that I am the daughter of earth and water and the nursling of the sky. I pass through the ports of the ocean and shores. I change, but I cannot die. For after the rain, when with never a stain, the pavilion of heaven is bare, and the wind and sunbeam with their convex gleam build up the blue dome of air. I silently laugh at my own canatop, and out of the caverns of rain, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, I arise and unbuild it again. क्लाउड कहता है कि आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं जो है वो धरती और पानी की पुत्री हूँ, क्योंकि बादल है जो पानी से ही तो भाप बन के बादल बनता है, और अर्थ है उससे वो राइज होता है, एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, और आकाश में जाके वो बादल बनता है। इसलिए वो कहता है कि मुझे आकाश ने पाला पोसा है, या जो मेरी नर्स है वो कौन है? स्काई है। आई पास थ्रू द पोर्ट्स ऑफ द ओशन एंड शोर्स, और जितने भी महासागर है या उनके किनारे हैं उनसे होते हुए मैं गुज़रता हूँ। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, मैं क्या करता हूँ? अपने रूप परिवर्तित करता रहता हूँ, लेकिन मैं कभी मर नहीं सकता, क्योंकि जो बादल है, कभी बादल होता है तो कभी बरसात की पानी की बूंदों के रूप में चेंज होता है, कभी ओले भी बन जाते हैं, या कभी स्टीम के रूप में होता है वो। इस प्रकार बादल के जो प्रकार है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन बादल कहता है कि मैं चेंज हो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी मर नहीं सकता। फॉर आफ्टर द रेन व्हेन विद नेवर ए स्टेन
The pavilion of heaven is bare, and the winds and sunbeam with their convex gleam build up the blue dome of air. I silently laugh at my own cenotaph, and out of the cavern of rain, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, I arise and unbuilt it again. बादल कहता है कि फॉर आफ्टर द रेन, जब बरसात ख़त्म हो जाती है, वैन विद नेवर स्टेन द पेवेलियन ऑफ हेवन इज़ बेयर, और जब आकाश में या आसमान में एक भी टुकड़ा बादल का नहीं दिखाई देता, एक धब्बा तक भी नहीं दिखाई देता, और आसमान का पूरा रास्ता कैसा होता है, बेयर होता है, सुनसान होता है, या आकाश पूर्ण रूप से साफ़ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है. एंड द विंड्स एंड सनबीम विद देयर कैवेक्स ग्लीम, और उसी समय जो हवा होती है वो चलती है, सनबीम जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तेज़ रूप से चमकती हैं. विद देयर कॉन्वेक्स ग्लीम बिल्ड अप द ब्लू डोम ऑफ एयर, सूर्य की किरणें और हवा दोनों मिलकर क्या करती हैं, आकाश में अपना डोम बनाती है, घर बनाती है नीले आकाश में. आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सिनाटोक, तब मैं क्या करता हूँ, चुपचाप अपने स्थान पे आराम से क्या होता हूँ, हंसता हूँ. एंड आउट ऑफ द कैवर्न ऑफ रेन, और अचानक से आउट ऑफ द कैवर्न ऑफ रेन, जो बरसात की गुफाएं हैं उनमें से, लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द वॉम, जिस प्रकार की बच्चा जन्म लेता है, लाइक ए घोस्ट फ्रॉम द टॉम, और जिस प्रकार से एक टॉम से या कब्र से कोई भूत निकल के आता है. आई अराइज एंड अनबिल्ट इट अगेन, और उसी प्रकार एक बच्चे के जन्म की भांति और एक भूत की भांति अचानक से मैं क्या करता हूँ, प्रकट होता हूँ, और जो खुला आकाश है, स्वच्छ आकाश है, जिसमें हवा ने और सूर्य की किरणों ने अपना डोम बनाया हुआ होता है, वहाँ मैं प्रकट होता हूँ. एंड अनबिल्ट इट अगेन, और मैं फिर उससे क्या कर देता हूँ, ध्वस्त कर देता हूँ, यानी कि फिर से मैं उस आकाश पे, स्वच्छ आकाश पे, जो कि बरसात के बाद स्वच्छ हो जाता है, उस पर अपना कब्जा कर लेता हूँ. तो यहाँ पे ये पोएम है जो समाप्त होती है. नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस स्टेंजा. Summary of both the stanzas. The cloud waves a bright circle round the sun as well as round the moon. As it covers the sky, the cloud appears like a bridge across the ocean or like a roof over the ocean. Mountains may be regarded as the pillars of the roof. The many-colored rainbow in the sky is like a decorated arc under which the victorious cloud is to pass like a conqueror returning from his exploits. The picture of the rainbow and the comparison of the cloud with a victorious warrior bringing home a large number of prisoners are remarkable. The cloud regards water and earth as its parents, while the sky is its nurse. The cloud may undergo changes and take different shapes, but it can never die. Sometimes when the rain has stopped and the sky has become bare, the cloud silently laughs at its own death and emerges once again, like a child from the womb or like ghost from the tomb, and covers the sky. Now have a little critical appreciation of the poem. Popularity of the poem, The Cloud. The poem was written by P.B. Shelley, one of the greatest romantic poets. The Cloud is written about the wonders of nature and its connection to life. It was first published on 12th of July in 1820. The poem reflects the dynamic of nature. It illustrates the water cycle, changing the nature of time and its impact on life. The cloud as a representative of cyclic pattern of nature. This poem is an expression of wonder. The poet explains how a cloud binds and connects other elements present in nature. It brings hail, snow, rain, moisture, and provides shades. Sometimes it acts as a bird when it shakes its wet wings over the birds, while sometimes it gets furious when it comes as thunder and lightning. However, at night, lightning acts as a powerful agent. The clouds
help him a lot when it sparks over the mountain, the plains over the ocean, and lake and mountain tops covered with snow. Also, the sun appears at the back of the clouds, as if the eagle is sitting for some time at the edge of rock. At sunset, unlike other entities present in nature, the cloud also stops its journey and loses itself in meditation. The poet reflects on more imaginative interpretations of nature, such as the moon, stars, rivers, mountains, and lakes. The speaker explains various aspects of the cloud, how it changes its form and functions but never dies. Sometimes, when the sun shines with full vigor, the cloud laughs at his own demise, but after some time it reappears and starts performing its duties again. Major themes in the cloud. These are natural beauty, mortality, and joy are the major theme of this poem. Throughout the poem, he personifies a cloud that acts as a mother to the earth, a nurse to the plants, and then flies under the skies like bees. The poet beautifully presents natural object as a community that acts in symmetry to bring rain, thunder, hail, and snow on earth. On a deeper level, the poet compares the cloud with human life, which is constantly changing and recycling. जो मुख्य थीम है इस कविता में वो है नेचुरल ब्यूटी, नेचर, क्योंकि क्लाउड नेचर का पार्ट है. मॉर्टलिटी, बादल का मरना या बादल का उत्पन्न होना. एन्जॉय, और जिस प्रकार बादल अपनी लाइफ को एन्जॉय करता है. इस पूरी पोएम में बादल की जो लाइफ स्पैन है उसकी तुलना ह्यूमन लाइफ से की गई है, जो कि कंस्टेंटली चेंज होती रहती है. नाउ सी द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम द क्लाउड. फर्स्ट इज assonance. Assonance is the repetition of vowel sound in the same line. For example, the sound who in over earth and ocean with gentle motion, and the sound of a in their great pines grown aghast. Second is alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sounds in the same line in quick succession. For example, the sound S in the sanguine sunrise with his meter eyes, and the sound of G and F in glides glimmering o'er my fleece-like floor, and the sound of Ch in when the power of air enchained to my chair. Consonants. Consonance is the repetition of consonant sound in the same line. For example, the sound of I. I wield the flail of the lessening hail, and the sound of N in I bind the sun thrown with the burning zone. Enjambment. It is a verse that does not come to an end in the same line, but continues in the next line. For example, there are several lines just like lured by the love of the genie that move in the depth of the purple sea. Next is hyperbole. Hyperbole is a device used to exaggerate a statement for the sake of emphasis. For example, in line 50, which only the angels hear, is exaggerated as if the heavenly creatures can hear the lightning and thunder in the sky. 6 is imagery. Imagery is used to make reader perceive things involving their five senses. For example, glides glimmering over my fleece-like floor. I bind the sun's throne with a burning zone, and the volcano are dim and the stars reel and swim. Sixth is personification. Personification is to give human qualities to inanimate objects. The cloud is personified throughout the poem. For example, I bring fresh showers for the thirsting flower. I am the daughter of earth and water, and I silently laugh at my own senator.
Next is simile. It is a device used to compare an object or a person with something else to make the meaning clear to the reader. For example, as still as a brooding dove, like a swarm of golden bees, and like a child from the womb, like a ghost from the tomb. Analysis of poetic devices used in the cloud. Stanza. A stanza is a poetic form of some lines. There are 6 stanzas in this poem, with each having different verses in it. Free verse. Free verse is a type of poetry that does not contain pattern or meter. This is a free verse poem with no strict rhyme or meter. So, thus the poem The Cloud ends here. This is part 3rd of the poem Cloud. Thank you.